गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एजुकेशन। आज हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि अल्टीमेटली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाई डिड दे लूज एंड व्हाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ओवर इंडिया। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंच French centers in India. French were the last Europeans to come to India for the purpose of trade. So, according to PDEF, I had said in the last class, PDEF, F for France. These French people were the last one to come to India for trade. During the reign of whose? During the reign of Louis XIV. The King's Master Colbert laid the foundation of French East India Company. So, who was responsible for the establishment and foundation of French East India Company? It was the King's minister called the Colbert. Okay. It was granted 50 years monopoly in India. How many years? 50 years monopoly in India and Pacific Ocean. In 1667, Francois Caron led to expedition to India to set up factories in Surat. Mercera, Persian who accompanied Karen, had established factory in Musolipatnam after obtaining a patent from Sultan of Golconda. So, Francis Karen was the governor at that time, who led expedition to India and set up factory in Surat. उसने सूरत में factory set up किया and Franco Squire was the one who set out expedition to India. मर्सेरा उनके एक्कम्पनी थे, मतलब उनके साथ ही रहते थे, एक मिनिस्टर टाइप के, एक गुरु चेला के टाइप में. सो ही वाज अ सबऑर्डिनेट ऑफ फ्रैंको स्क्वायर कैरन. मर्सेरा was his name. He was the one who established factory where he established in South India in Musolipatnam and obtaining patent from the Sultan of Golconda. गोलकोंडा से सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से परमिशन लेके उन्होंने मुसोलीपट्टनम में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया and township in Calcutta near Chandan Nagar, and by taking the permission of Saista Khan, Mughal Subadar of Bengal. अब उन्होंने दो जगह सेटअप किया, एक इन मुसलिपत्तनम एंड इन बंगाल. With due respect and taking permission from from the existing Mughal governors there. Pondicherry, very important site for French. Pondicherry, center of French power. Sher Khan Lodi granted Francois Martin, director of Musulman factory, a site for settlement. अब किनके अंडर ग्रांट कर दिया गया? फ्रैंकोइस मार्टिन. शेर खान लोधी ने फ्रैंकोइस मार्टिन को बोला कि आप मुसलिपत्तनम में आप फैक्ट्री सेटअप कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ही वाज गिवन दैट परमिशन. Pondicherry was founded in the same year when Francois Martin replaced Caron as a French governor. So Francois Martin वही थे जो कैरन, जो पहले मैंने थोड़ा देर पहले बोला, he replaced the French governor. And that time itself Pondicherry was discovered and Pondicherry came into play and a very important site for the French rulers. And Pondicherry became the place of importance during the time of Francois Martin. Now, every rulers and every dynasty did have some setbacks, and French also had some setbacks. Setbacks means the obstruction, the hindrance that come into the way of your path. Number one, when war between Dutch and French broke, the Dutch captured Pondicherry with the help of English alliance. Although it was returned back to French under the Treaty of Ryswick. अच्छा, डच और फ्रेंच के बीच में एक वार स्टार्ट हो गया. वार के कारण क्या हुआ कि उन्होंने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ रिस्विक हुआ. ट्रीटी ऑफ रिस्विक इसके तहत पौंडीचेरी को फिर से रिटर्न कर दिया. किन लोगों को? फ्रेंच लोगों को. रिटर्न बैक टू फ्रेंच अंडर द ट्रीटी ऑफ फ्रेंच रिचविक. RYSWICK, रिस्विक. नंबर टू, वार ऑफ सक्सेशन इन स्पेनिश. ओके, स्पेन में वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जिससे क्या हुआ कि फ्रेंच लोगों को इंडिया में जितना भी उन लोगों का फैक्ट्री सेटअप था, जितना भी उन लोगों का सेटलमेंट था, उन लोगों को छोड़ के उन लोगों को स्पेन जाना पड़ा. And Francois Martin also died, and that was a severe setback for the French East India Company. Reorganization of French Company. अब setback तो आया, obstruction तो आया, लेकिन तभी they recovered. How? Reorganization was possible because of two active and wise governors. Without active members and intelligent members, a huge empire cannot be recovered, right?
So we need to know about the name, the Lenore and Dumas. Lenore and Dumas were the two active and wise governors which helped in reorganization of French company. French India was backed up by French possession Mauritius and reunion of the South Indian Ocean. Okay, now struggle for supremacy between Anglo and French. Anglo means the English one and the French. These two institutions like fought like anything for supremacy in India. The most important wars were the three Carnatic wars, which we'll study here. यही थ्री कार्नाटिक वार ने ही साबित किया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज केपेबल इनफ टू रूल ओवर इंडिया एंड नॉट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. The three Carnatic wars, these were the यही तीनों यही तीनों कार्नाटिक वार ने साबित कर दिया और कुछ नहीं. The Carnatic War. Both British and French came to India for trade. We know very well, दोनों ही ट्रेड करने के लिए आए थे. The vision of trade changed to gain political power. क्या ये ट्रेड करते करते क्या उन लोगों में माइंड में आया कि नहीं, we'll rule over India. The rivalry began with the outbreak of Austrian War of Succession. कैसे स्टार्ट हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सक्सेसर बनेगा नहीं बनेगा इसका भी वार छिड़ा हुआ था किन लोगों के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में. This led to three Carnatic War, which proved the capability of English over the French. अभी थोड़ा देर पहले मैं क्या समझाया, यही Carnatic War था जो प्रूव किया किसका कैपेबिलिटी, इंग्लिश का कैपेबिलिटी ओवर द फ्रेंच. The political situation in South India was confusing. साउथ इंडिया डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था धीरे धीरे. The fall of Hyderabad was the end of Muslim expansion. The Nizam of Hyderabad, Asaf Jah, was old and fully against the battle of Marathas. असफ जाह जो थे वो निजाम ऑफ हैदराबाद के थे. ही वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड ही वॉज कंटिन्यूसली फाइटिंग विद द मराठास. अब क्या हुआ, दिस डिड नॉट लाइक टू इज साउथ द करमंडल कोस्ट डिड नॉट हैव एनी रूलर. करमंडल कोस्ट में भी कोई रूलर नहीं था. दिस ये बताता है कि साउथ इंडिया टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया था, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर वहां पर नहीं था, इसलिए इट वॉज वेरी इजी टू कैप्चर लाइक साउथ इंडिया. First War of Carnatic, 1740-1748. कर्नाटिक वॉज अ नेम गिवन टू कोरोमंडल कोस्ट. थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि कोरोमंडल कोस्ट में कोई रूलर नहीं था, अब कर्नाटिक उसको नाम दिया गया. कर्नाटिक वॉज अ नेम गिवन टू कोरोमंडल कोस्ट बाय द यूरोपियन. दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार विच वॉज कॉज्ड इन द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था. तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन तो हो रहा था फॉरेन एरिया में, बट दिस रिजल्टेड इन दी Carnatic War. First Carnatic War were in India. Cause, कारण क्या था, इंग्लिश नेवी अंडर बर्नेट, बर्नेट नाम था जो इंग्लिश नेवी के सुपीरियर इंचार्ज थे, सीज some ships to provoke France. अब इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच लोगों को प्रोवोक किया, मतलब भड़काया. फ्रेंच रिटेलिएटेड मतलब उन्होंने अपना जवाब कैसे दिया, बाय सीजिंग मद्रास. उन्होंने इंग्लिश का जो रूल था मद्रास के ऊपर, उसने मद्रास छीन लिया. विद द हेल्प ऑफ फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स फ्रॉम मॉरिशियस के पास बहुत सारे शिप्स थे, उन लोगों की मदद से उन्होंने मद्रास के ऊपर अटैक किया. द आइजल ऑफ फ्रांस, ये नाम है उस शिप का, आइजल ऑफ फ्रांस अंडर एडमायरल ला बोर्डानियस, फ्रेंच गवर्नर इन मॉरिशियस. ये नाम याद रखिएगा. रिजल्ट में क्या, फर्स्ट कर्नाटिक वार में व्हाट वाज द रिजल्ट, द वार एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. एक ट्रीटी हुआ Aix-la-Chapelle which was signed bringing Austrian War of Succession to conclusion. ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था तभी कर्नाटिक वार वन हुआ इंडिया में, तो उसी को ही एंड में लाया गया बाय साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. अंडर दिस मद्रास वाज रिटर्न बैक टू इंग्लिश. जो मद्रास को कैप्चर कर गया था उसको इंग्लिश के पास लौटाया गया एंड फ्रेंच गॉट बैक द टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस वॉर ब्रॉट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आर्मी, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उस समय डिसिप्लिन आर्मी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, बट वेरी शॉर्ट एंड वेरी लाइक स्मॉल आर्मी को डिफीट अ ह्यूज आर्मी विद जस्ट फॉर डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन आर्मी, एक छोटा आर्मी होते हुए भी अगर वो डिसिप्लिन है तो बड़ा आर्मी को वो डिफीट कर सकता है. यही वार से यही एक बहुत बड़ा चीज साबित हुआ. It is remembered for the fight between French forces and forces of Anwar Uddin. अब आप लोग ये सोचेंगे कि अनवर उद्दीन कौन थे और इस प्ले में कैसे आ गए. अनवर उद्दीन was a नवाब of Carnatic
इनको इनको मतलब इंग्लिश ने बोला कि आप हमारे होके लड़ो। इंग्लिश ने हेल्प मांगा। किनसे मांगा? अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे उस समय। इंग्लिश ने उनसे हेल्प मांगा कि आप फ्रेंच फोर्सेस से लड़ो, हमारे हमारे फॉर में आके आप फ्रेंच से लड़ो। whom English had appealed to help. Okay, इंग्लिश ने उनको पास जाके बोला कि are you help us? Okay, and against French, the battle was is known as the Battle of Saint Thom Madras. French forces were under Captain Paradise against against wait just a minute against Mahfuz Khan on the bank of river Adyar. This showed the importance of naval power. Okay, students, इससे क्या हुआ कि आपको शॉर्ट एक डिसिप्लिन आर्मी का भी इंपॉर्टेंस समझ में आया। और फ्रेंच फोर्सेस किसके अंडर में थे? कैप्टन पैराडाइज, which were against महफूज खान in the bank of Adyar, river Adyar. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ 48 में, and in the beginning of 49 itself second Carnatic war started. War was provided by the rivalry in India. वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का असली कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट मेनली ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रिया, like in Austria for Austria war of succession. But second Carnatic war began for the rivalry in India itself. डुप्लेक्स फ्रेंच कवर। डुप्लेक्स इस बहुत बड़ा पर्सनालिटी है आपके इस बुक में भी। टोटल 1 to 1.5 पेज इट्स रिटन अबाउट डुप्लेक्स itself. So he was a very 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 great leader for the French people. Dupleix, the French governor, wanted to increase his power by interfering in the with the locals in South India. उसको लगा कि मैं साउथ इंडिया में अपना थोड़ा वर्चस्व बनाऊं, इसलिए ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द लोकल पीपल। वहाँ के लोकल पीपल लोगों को उनके साथ फाइट करना शुरू किया, उन लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू किया। Cause the opportunity came with the death of Nizamul Mulk, founder of Hyderabad. ऐसे भी साउथ इंडिया डिसइंटीग्रेट हो चुका था, हो रहा था धीरे धीरे। देयर वर नो पावरफुल लीडर्स इन साउथ इंडिया। सो दिस बिकम अपॉर्चुनिटी। जब निजाम उल मुल्क का गुजर गए वे, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद एंड रिलीज ऑफ चंदा साहिब, सन ऑफ दोस्त अली नवाब ऑफ कर्नाटक। ओके, इनको भी रिलीज कर दिया गया बाय दी मराठास। मराठास के अंडर में वो कैप्चर्ड थे, लेकिन चंदा साहेब को रिलीज कर दिया गया। द एक्सेशन ऑफ नासिर जंग, द सन ऑफ निजाम, टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद। अब हैदराबाद के जो फाउंडर थे उनका तो डेथ हो गया, अब थ्रोन में तो किसी को बैठना है। अब थ्रोन में बैठने के लिए ग्रैंडसन और सन के बीच में झगड़ा होने लगा। किनके? नासिर जंग। नासिर जंग सन ऑफ निजाम एंड मुजफ्फर जंग ग्रैंडसन ऑफ निजाम। निजाम यहाँ गुजर गए, उसका बेटा और उसका पोता दोनों लड़ने लगे कि हम कौन थ्रोन में बैठेगा। नासिर जंग द सन ऑफ निजाम and the Muzaffar Jung, grandson of Nizam. Okay. Also, the appointed Anwar Uddin as the Nawab was resented by Chanda Sahib. अब देख सकते हैं यहाँ चंदा साहब को तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन नवाब किसको बनाया गया? अनवर उद्दीन का नवाब बनाया गया। सो मुल्क निजाम के मरने के बाद सक्सेशन में कौन बैठेगा, इसका एक फाइट चलने लगा। और नवाब नवाब किसको बनाया जाएगा, इसका एक फाइट होने लगा। The French supported Muzaffar Jung and Chanda Sahib in Deccan and Carnatic respectively. मतलब फ्रेंच ने किन किन को सपोर्ट किया? मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और चंदा साहिब को सपोर्ट किया। लेकिन इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया? नासिर जंग को सपोर्ट किया और अनवरुद्दीन ने सपोर्ट किया। मतलब फिर से इंग्लिश और फ्रेंच और इंग्लिश केम अगेंस्ट ईच अदर इन केस ऑफ लाइक सपोर्टिंग। ये इनको सपोर्ट कर रहे, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। French supported Muzaffar Jung and Chanda Sahib and English supported Nasir Jung and Anwaruddin. यही बहुत बड़ा एक कॉज बन गया फाइट का। Course of war: Muzaffar Jung, Chanda Sahib and French army defeated and killed Anwaruddin. ये तीनों मिला के इन्होंने अनवरुद्दीन को मार दिया at Battle of Ambur. Muzaffar became the Subadar of Deccan and Dupleix became governor of all Mughal territory, and French army under Bussy was stationed at Hyderabad. Some areas of Odisha and Pondicherry were ceded to French. Okay. Muhammad Ali, son of Anwar, was not given adequate protection at Trichinopoli.
Trichinopoly, the present-day Madras. Robert Clive, an agent of English, proposed attack on Governor of Madras, Saunders. He raided Arcot, capital of Carnatic, to relieve pressure on Trichinopoly, city in Madras. He assumed that Chanda Sahib would rush to protect his capital, and the same happened when he attacked Arcot. Finally, Trichinopoly was relieved of its siege and the aid of Mysore, Tanjore, and Maratha chief Morari Rao, while Chanda Sahib was forced to surrender and was executed by Muhammad Ali. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेला गया. देखिए, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच आर्मी डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन. अनवरुद्दीन को तो मार दिया गया, लेकिन उनका बेटा का नाम मोहम्मद अली was son of Anwar, was not giving adequate assistance to Trichinopoly. At Trichinopoly, Trichinopoly is a place in Madras. वहाँ पर मोहम्मद अली मतलब रह रहे थे उस समय. So he was not given adequate assistance. Robert Clive was a subordinate of the English agent of English who proposed an attack on the governor of Madras. Governor of Madras उस समय कौन थे? सॉन्डर्स. इनके ऊपर अटैक करने का एक ही कारण था कि ट्रिचनोपोली में थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया जाए, क्योंकि दैट देयर वाज अ प्रेशर फॉर बैटल एंड अटैक एंड ऑल. He raided Arcot, the capital city of Carnatic, to relieve pressure on Trichinopoly, city of Madras. He assumed that Chanda Sahib would rush to protect his capital. अब क्या हुआ, ये एक ट्रिक खेला गया. इन्होंने बोला कि किसने बोला? रॉबर्ट क्लीव ने बोला कि हम लोग आरकट में अटैक करते हैं. अब आरकट को बचाने के लिए चंदा साहिब अपना अपना राज्य छोड़ के चंदा साहिब अपना कैपिटल को बचाने के लिए जाएंगे. इसके चक्कर में क्या होगा? ट्रिचनोपोली विल बी रिलीव्ड है ऑफ द सीज विद द एड ऑफ. अब लास्ट में ऐसे ही हुआ, उन्होंने जो सोचा वही हुआ. रॉबर्ट क्लिफ ने आरकट में अटैक किया. he came to protect, चंदा साहिब came to protect his capital. अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ट्रिचनोपोली में थोड़ा सा रिलीफ हुआ, but this was with the help of with the aid of Mysore, Tanjore, Maratha chief Morari Rao. Okay, Chanda Sahib was forced to surrender and he was executed. Executed मतलब मार देना. चंदा साहिब को लास्ट में किन्होंने मार दिया? इन्होंने, मोहम्मद अली ने मार दिया, who was a son of Anwar. Result: the French authority were annoyed at the heavy losses that Dupleix policy involved and thus decided to recall them. Godey, who succeeded Dupleix as a French governor in India, who was successor of Dupleix, mark the name Godey. French and English agreed not to interfere in the internal matters of the locals. Also, they left with the position of the territory they occupied at the time of treaty. Okay, fine. Now, Third Carnatic War. Second Carnatic War खत्म हुआ. अब 1758 से 63 तक थर्ड कार्नाटिक वॉर स्टार्टेड. यूरोप में क्या हो रहा था? 7 साल से एक लड़ाई चल रहा था. When Austria wanted to recover Silesia, Britain and French were again on the opposite sides. Britain and French were again on the opposite side. Quotes: French army under Count de Lally captured English fort of Saint David and Vijayanagaram. English, on the other hand, inflicted heavy loss on French fleet under Admiral D. at Musulipatana. देखिए कैसे दोनों आर्मी आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे. फ्रेंच ने कैप्चर किया था इंग्लिश फोर्ट विच वाज ऑफ सेंट डेविड. इंग्लिश ने क्या किया था? एक फोर्ट को कैप्चर किया था ऑफ सेंट डेविड का. English forces were French forces were under Count de Lally. And English ने क्या किया था? On the other hand, inflicted heavy loss on French fleet. French fleet का मतलब होता है group of small ships. अब English ने क्या किया? फ्रेंच का जो शिप था एट मुसुलिपत्तनम, उसके ऊपर अटैक कर लिया. अब English were under Admiral D. So French army were under the Count de Lally and English army were under Admiral D. Battle of Andi was very important. In the third Carnatic War, which was won by English, last में English ही विजेता बने. General Ayerkuti of English routed French and took Bussy, French governor, as prisoner. Ultimately, General Ayerkuti of English became victorious, routed over French and took Bussy, उस समय governor थे, as prisoner. Pondicherry was defended for a long time, but ultimately Lally was surrendered. With loss of Gingin Mahe, French lost its power in India and at last Lally was executed. अब सब गवर्नर को धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर दिया गया.
लास्ट में पौंडीचेरी भी सौंप दिया गया इंग्लिश को, एंड फ्रेंच डिड नॉट हैव एनी अदर पावर इन इंडिया. Result: the Treaty of Peace of Paris restored to the French their factories in India. क्या ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस. जितना भी फ्रेंच फैक्ट्री था वो उनको रिटर्न कर दिया गया. आफ्टर वार द फ्रेंच लाइक द पोर्टुगीज एंड डच कॉन्फाइंड देमसेल्फ टू स्मॉल कॉमर्स एंड ट्रेड विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. लास्ट में फ्रेंच लोगों को लगा कि वी विल नॉट रूल ओवर इंडिया एनीमोर, वी विल जस्ट हैव ट्रेड. मुझे बस ट्रेड से मतलब है, मुझे और किसी से कोई फाइट, कोई तरह का एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, मुझे बस ट्रेड ट्रेड करना है और अपने घर जाना है बस. डच वॉज ऑलरेडी डिफीटेड इन द बैटल ऑफ इदारा. एंड थोड़ा देर क्लास का शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि डच और फ्रेंच दे वर लाइक गोइंग पैरेलल. सो डच वर आल्सो डिफीटेड इन बैटल ऑफ इदारा. Battle of Policy 1757 brought ultimate British rule to India. Significantly, Battle of Vandy was proved to be inevitable fall of India into the hands of British. Very important. Battle of Vandy was proved the inevitable fall of India into the hands of British. Very sad, but history है, यही बात है. Battle of Vandy was, याद रखना. Course of English success and French failure. Causes. क्यों इंग्लिश सक्सेस हुए एंड क्यों फ्रेंच फेलियर हुए? English company had private enterprise. It could take decisions without waiting for approval, whereas French company was a state concern. The decisions were made under state government, which delayed the process. क्या था? इंग्लिश कंपनी प्राइवेट एंटरप्राइज था, वो अपने आप में राजा था, उसको किसी से कोई तरह का परमिशन लेना नहीं पड़ता था. बट फ्रेंच वाज अ स्टेट कंसर्न, उसको चारों तरफ से सोच समझ के, चारों ओर से मतलब परमिशन लेके ही सब काम करना पड़ता. दिस यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Second, English naval power was strong than the French. Very obvious, English naval power was really very strong. Calcutta, Bombay and Madras belong to English. Calcutta, Bombay and Madras belong to English, but French के पास सिर्फ पौंडीचेरी था. The British never neglected their commercial interests, but French subordinated their commercial interests to territorial ambition. हमने क्या देखा? ब्रिटिश लोग बहुत ही चालाक थे. भले ही वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए वो लोग पूरा कोशिश में है, फोर्टिफाई करने के पूरा कोशिश में, बट दे नेवर नेग्लेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट. मतलब उन लोगों ने हमेशा प्रायोरिटी ट्रेड को रखा. वेरएज फ्रेंच लोगों के केस में क्या हुआ? दे मतलब चारों तरफ से पैर रखना. आप कमर्शियल भी बना चाहते हो, फोर्टिफाई भी करना चाहते हो, वहां पर पॉलिटिकल गेम भी करना चाहिए. इससे क्या हुआ? द इकोनॉमी गॉट डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स and ultimately nothing was fruitful. Availability of able English commanders. English commanders and governor were really able, like Sir Cooty, Major Stranger, Lawrence, Robert Clive, and many more. But French only had General Duplex. Okay, फ्रेंच के पास सिर्फ डुप्लेक्स था, बाकी इंग्लिश के पास बहुत एबल गवर्नर रूलर्स थे. एक छोटा सा है रूलर डेंस, नथिंग. Danish East India Company was established 1616 and 1620 in Tranquebar, Tamil Nadu and Srirampur, West Bengal. The Danes left India because they were not successful in establishing themselves. Okay, reasons. Reasons for English success against other European power. इस पीडीएफ में हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश और फ्रेंच का एक कंपैरिजन. But in the last PDF, we'll see about the success of English over other Europeans. Other Europeans in the sense Dutch भी आए थे, French भी आए थे, English itself came, Portuguese came, but why only English succeeded? What were the differentiating factor between them and the English? English East India Company was controlled by board of directors. Okay, whose members were elected annually, whereas French and Portugal were state-owned and feudalistic in nature. थोड़ा देर मैंने पढ़ा, पहले ही बोला कि English were the central capital, central authority, and French and other Europeans had the state. They were the state concern. They need to take permission from several subordinates, which used to take a lot of time. The shareholder of English company exercised influence as the votes could be bought and sold through purchase of share. English company में क्या था कि उन लोगों का जो votes था, that could be bought and sold. But French company, the monarch had 60% share. French company में क्या था कि उन लोगों का जो शेयर था
द मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट, उनके पास 60% शेयर होता था, एंड डायरेक्टर्स वर नॉमिनेटेड, हियर द मेंबर्स वर इलेक्टेड, एंड हियर इट वर टू बी नॉमिनेटेड, हु वर सपोज टू कैरी आउट डिसीजंस। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स डिसीजन लेंगे, ओके, एंड these two nominated members were appointed by the government. The shareholder took least interest in prosperity of the company. अब एक चीज देखिए, जिस शेयर में, जिस काम में मेरा लाभ नहीं होगा उसमें मैं अपना माथा भी नहीं लगाऊंगी। फ्रेंच कंपनी में सेम थिंग, इन लोगों का मोनार्क के पास ही 60% हुआ करता था, ओके, एंड बाकी का जो था वो लाइक नॉट इवन गिवन टू द शेयर होल्डर्स। सो व्हाई विल समवन बैंग हिज हेड, क्यों कोई अपना माथा लगाएगा। Number two, naval superiority. The English learned from Portuguese the importance of fleet technique, and thus they improved it. The Royal Navy of British, remember the Royal Navy of British was largest and advanced at that time. Industrial Revolution, उस समय रेनेसा भी चल रहा था यूरोप में। The invention of new machines, technologies in England helped them trade and maintain hegemony. Number four, military skill and discipline. New tactics with advanced technology with a lot of training and discipline was a key of their successful battles. Number five, stable government. Number six, zeal, lesser zeal for religion. बाकी यूरोपियंस आए थे क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए, एंड दे वर intolerant towards Muslims, some were intolerant towards Hindus, and like this English were nothing. English did not have all these things. Only their main focus what was to trade and not on changing of the religion of other people. Number seven, use of debt market, very important topic. The world's first central bank, Bank of England, was established to sell government debt टू दी मनी मार्केट। मनी मार्केट में जैसे आज भी गवर्नमेंट डेट इशू किया जाता है, तो उस समय में भी गवर्नमेंट डेट इशू किया जाता था मनी मार्केट में, ऑन द प्रॉमिस ऑफ डिसेंट रिटर्न। आपको आज आप कोई डेट खरीदते हो गवर्नमेंट का, तो उसमें लिखा रहेगा प्रॉमिस, दे विल प्रॉमिस यू फॉर अ डिसेंट रिटर्न। डिसेंट रिटर्न मतलब आज आप इतना पैसा में खरीदो, कल आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट देयर वाज ओनली वन कंडीशन। कंडीशन क्या था? डिफीटिंग ब्रिटेन्स डिफीटिंग राइवल कंट्रीज। आपको रिटर्न उसी समय दिया जाएगा जब आप ब्रिटेन के जितने भी ऑपोजिशन में है उन लोग आप डिफीट करो। ब्रिटेन के ऑपोजिशन में कौन कौन थे? पोर्टुगीज थे, देयर वर दी डेन्स, देयर वर दी डिफरेंट डच डच कंपनीज, ओके, पोर्टुगीज, दी फ्रेंच। अगर इन लोगों के साथ आप लड़ोगे और ब्रिटेन ब्रिटेन की तरफ से अगर जाओगे, तो देन ओनली यू विल गेट द डिसेंट रिटर्न। French and other went bankrupt with outdated way of raising money, but Britain could spend money on military rather than on rivals. Military strong रहेगा तो सब चीज मुमकिन है. So Britain was very clever enough to make the stronghold in military. आज इतना ही रहेगा. चैप्टर ये खत्म तो हो गया है. इन नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे. आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मेरे इस चैनल के द्वारा आपको कुछ मदद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा फीडबैक, मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप मुझे बता सकते हैं. मैं किस वे में आपको हेल्प कर सकती हूँ, मेरा पूरा कोशिश रहेगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी मेरा एक सहयोग हम चाहते हैं. मुझे आप फीडबैक दीजिए, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है. आप लोगों की तरफ से मुझे और क्या क्या ऐड करना है, मुझे और क्या वैल्यू ऐड करना है, यू कैन सजेस्ट मी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट. नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आप इसको रिवाइज कीजिएगा. कंटिन्यूअसली रिवीजन इज अ की टू सक्सेस. आप बुक्स 14 क्यों ना पढ़ लो, 18, 17, वट एवर, करोड़ों बुक क्यों ना पढ़ लो, बट टेक ओनली वन बुक, रिवाइज इट लाइक 1000 times. एंड स्पेक्ट्रम हिस्ट्री फॉर मॉडर्न इंडिया इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक. मैंने बहुत पहले ही बोला था कि इसके तरह मॉडर्न हिस्ट्री में, या बिपिन चंद्र ऑल्सो यू कैन लाइक यू कैन स्टडी, but it will take time, and instead of wasting time over other books, you can take one book spectrum and you can revise it like so many times. You can practice last previous year question paper. ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कोई भी एग्जाम के लिए. सो आज तक इतना ही रहेगा. थैंक यू सो मच. और इस चैनल को आप
एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही मेरे लिए एक सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।